मैं जैसे ही घर से बाहर निकली मैंने देखा एक बाइक बहुत तेज स्पीड पे जा रही थी। आई वंडर्ड कि इतनी रात को कौन जा रहा है। देन सडनली आई नोटिस्ड द नेम प्लेट। और फिर आगे क्या हुआ? यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग। यस, तो हम सुना रहे हैं एक स्टोरी। सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन स्टोरी राइटिंग। Hello everyone, welcome to Saral English at Sakhar Institute. Now, story writing is a very important topic for class 9 and class 10 students, and you secure good marks in story writing if you know the pattern of writing the story, if you know कि हमें क्या क्या points को ध्यान में रखना है while writing a story. Story writing is not a difficult task at all because we all are good at making stories in our personal lives. Fine, हमको कहानियाँ बनाने में बहुत मज़ा आता है, right? जैसे आपके स्कूल में कोई घटना हुई कि दो बच्चों में आपस में लड़ाई हो गई, वही घटना आप अपने किसी फ्रेंड को सुना रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा मिर्च मसाला डालेंगे। अरे यार पता है क्या हुआ, पहले ना राजेश ने आदित्य को मतलब कुछ ज़ोर से बोल दिया तो फिर आदित्य को गुस्सा आ गया, फिर आदित्य ने अपनी स्कूल बॉटल उठा के उसके सर पे मार दी, फिर पूरी क्लास में केओस हो गया। आ रहा है मज़ा, बहुत मज़ा आ रहा है सुनने में। तो ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ हमको अपनी नोटबुक पे भी लिखनी है फॉर एग्जाम्स, बट वी हैव टू कीप सर्टन पॉइंट्स इन माइंड सो दैट हमारी जो स्टोरी है वो रियल लगे, हमारी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा फिक्टिशियस ना हो। द स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी दे शुड नॉट बी वेरी फिक्टिशियस। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कुछ आउटर वर्ल्ड के आप कैरेक्टर्स हैं, लाइक सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेस शिप्स, यू आर टॉकिंग अबाउट zombies, you're talking about Spider-Man, Superman. So whenever you write a story, it should be relatable to the real life. Fine. जो स्टोरी पढ़ रहा है, जो स्टोरी आपकी चेक कर रहा है, वो देखना चाहता है कि ठीक है आपकी इमेजिनेशन है, बट दैट इमेजिनेशन शुड बी विद इन द रियल वर्ल्ड. फाइन, इट शुड नॉट गो जस्ट हेवाया. क्लियर? सो स्टोरी लिखने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever you write a story, आपको कोई भी आप स्टोरी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, उसमें क्या होता है ऊपर? टाइटल. यस, सो टाइटल पढ़कर ही हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि स्टोरी किस बारे में होगी. सो डेफिनेटली टाइटल शुड बी रिलेटेड टू द स्टोरी. ये नहीं कि टाइटल आपने कुछ और डाल दिया और स्टोरी बिल्कुल ही अलग है. फाइन, टाइटल आपने डाल दिया कि कर्म ही पूजा है. फाइन, पर आपकी जो स्टोरी है वो किसी मतलब रैंडम कोई आप बाज़ार की बात कर रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स वहाँ घूम रहे हैं, वो पानी पूरी खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, तो कोई मतलब कनेक्शन नहीं है. क्लियर? सो टाइटल शुड बी रिलेटेड टू द स्टोरी एंड मेनी पीपल गेट कन्फ्यूज्ड. वो टाइटल और मॉरल में कन्फ्यूजन हो जाता है उनको. क्लियर? मॉरल इज लाइक व्हाट लेसन यू आर गेटिंग फ्रॉम द स्टोरी, कि हमको क्या सबक मिल रहा है वो स्टोरी पढ़कर या सुनकर. क्लियर? सो मॉरल फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिराइव होता है आफ्टर रीडिंग द स्टोरी. क्लियर? And one more thing I would like to add, that whenever you are given to write a story, you will not write the moral of the story. आप स्टोरी का मॉरल नहीं लिखेंगे, that you will leave to the reader. फाइन, जो एग्जामिनर है आपका, जो रीड कर रहा है वो आपका पैसेज, वो स्टोरी, ही विल डिसाइड दैट व्हाट मॉरल आर यू एक्चुअली ट्राइंग टू कन्वे. फाइन, सो यू विल जस्ट फोकस ऑन द टाइटल. Then whenever there is a story, obviously you need characters for the story. Fine, so आप अपने स्टोरी में कुछ characters लीजिए और उन characters के नाम दीजिए. And one more thing, don't include too many characters in the story. अगर आपने बहुत ज़्यादा characters involve कर दिए स्टोरी में तो आप खुद ही confuse हो जाएंगे कि आप सबको समेटे कैसे. Clear? अचानक whenever when we give too many characters in the story, then what happens that sometimes we try to make one person important and suddenly our story switches in some other direction and then the other person becomes important. Fine, and this person loses the importance, जैसे कि हम आगे चल के बात ही नहीं करते हैं. So अगर हमारी स्टोरी में सिर्फ 3 या 4 कैरेक्टर्स मैक्सिमम है, so it will be easy for us to wind up the story also. ठीक है, आपने कहानी बनानी शुरू कर दी लेकिन उस कहानी को आपको खत्म भी करना है. क्लियर? ओके.
स्टोरी राइटिंग यूजुअली आपका 200 to 250 वर्ड्स में आता है, क्लियर। तो योर वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड मोर देन दैट, फाइन। मैक्सिमम आपका 30 to 50 वर्ड एक्सीड कर सकता है, दैट इज मैक्सिमम, बट ट्राई टू राइट द स्टोरी विद इन द वर्ड्स लिमिट विच इज गिवन टू यू, क्लियर। ओके, now whenever you have introduced the characters in the story, तो आपका story में एक protagonist होना चाहिए। protagonist means like the person who is the main hero of the story. Hero doesn't mean like the star of the story, fine, कि आप अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं या कोई you know like you're talking about any big actor and all, सनी देओल की बात कर रहे हैं, no. What I mean to say, the protagonist मतलब जो जिसका main part है, fine, who is the lead character in your story, clear, जिसके आसपास स्टोरी आपकी रिवॉल्व कर रही है। स्टोरी या कहानी सुनने में आपको कब मज़ा आता है, जब आपको कोई, ठीक है, आप का भाई या बहन आपको आके बताता है कि भाई नीचे ना 2 आंटियां बात कर रही थी जब मैं आया, तो वो एक आंटी बता रही थी कि उन्होंने आज पालक बनाया है, दूसरी आंटी बता रही थी कि उन्होंने आज दाल बनाई है, हो गई स्टोरी ख़त्म। मज़ा आया सुनने में? बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्लियर। हाँ, अगर हम ये स्टोरी में थोड़ा सा तड़का डालें, कि जब मैं नीचे से पार्क के पास से आ रहा था, तो वो जो लाइक सेठ आंटी हैं, वो बता रही थी लाइक माथुर आंटी को कि भाई जो तुमने कल दाल भेजी थी ना, उसमें नमक बहुत ज़्यादा था और तुमने हल्दी भी ठीक से पकाई नहीं थी। और इस पर जो है वो सेठ आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, और फिर अचानक उन दोनों में लड़ाई बढ़ गई, और वो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो गए एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे को गाली भी देने लगे, बल्कि वहाँ पे गार्ड्स वगैरह भी आ गए, और कुछ लोग भी वहाँ पे नीचे उतर के आ गए। आ रहा है मज़ा ना सुनने में? सो ऑलवेज एड सम तड़का इन योर स्टोरी, क्लियर। तो कहानी में कोई ट्विस्ट डालिए, कहानी में कोई एक प्रॉब्लम क्रिएट करिए, क्लियर, एंड देन इवेंचुअली उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए कि ठीक है। फिर उसके बाद मिस्टर सेठ और मिस्टर माथुर भी वहाँ पर आ गए, और उन्होंने अपनी वाइफ्स को समझाया, और फिर मामला ठंडा हुआ, एंड इवेंचुअली इवन दे रियलाइज्ड कि व्हाट स्टुपिड थिंग दे वर फाइटिंग ऑन, क्लियर, एंड फिर माहौल ठीक हो गया, क्लियर। तो हमेशा पहले एक टाइटल सोचिए स्टोरी का, उसमें आप कैरेक्टर्स रखिए, गिव नेम्स टू द कैरेक्टर्स, क्लियर, बिकॉज बार बार आप ही शी या दैट मैन दैट वुमन करके लिखेंगे तो आपका स्टोरी जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड, क्लियर। क्रिएट अ क्लाइमेक्स इन द स्टोरी, एक छोटी सी कोई प्रॉब्लम डाल दीजिए स्टोरी में, क्लियर, और फिर आप उसको एंड में यू ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। आप दिखाइए कि कैसे जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो स्टोरी का जो मेन हीरो है स्टोरी का, वो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्लियर। स्टोरी राइटिंग आपका जो है वो किसी तरह से लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ गिवन लाइक आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं, एंड यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड द स्टोरी, fine. We'll just pick up an example like the example which I just started with, like as soon as I stepped out of the house, I saw a bike going very fast. I wondered who could that be at that time. It was already 11 o'clock. Then I noticed that number plate, and I realized that it was Umesh's bike. I wondered where he was going so late at night. I had forgotten my phone at home, so I simply went to his house. His house is just next door. I rang the bell and his mother opened the door. I asked his mother that where Suresh had gone so late at night. She was looking quite confused and worried. She said that there was a call from the hospital that Umesh's father had met with an accident. I asked her that which hospital the call came from, and she said that the call came from the city hospital. I tried to console her and I told her not to worry, and I even said that I would go to city hospital with Umesh. I came back to my house. I took my car keys. I informed my mother and told her that I would come back in an hour and that I was going to the city hospital. When I reached the hospital, there was a lot of chaos
in the hospital because there were too many accident cases. I went to the reception and I saw Umesh standing there looking very perplexed. I asked him what had happened. He said that he had received a call from the receptionist that his father had met with an accident. But he said that even after inquiring about him, the nurse or the receptionist was not able to place his father. We all grew very worried. Then suddenly I saw his father coming from the left side of the corridor. I exclaimed and I said, Umesh, look, your father is here. We rushed up to his father and we asked him like what had happened. His father said that while coming from office, he saw a person lying on the road. He had met with an accident, so he simply brought that person to the hospital. When we asked him about the phone call, he said, oh, there was a lot of confusion that time and a lot of people had collected at the reception because there were more than 2 or 3 cases of accident. And he had given his phone battery had died, so he could not call from his phone. He asked the receptionist to call at his place and inform that he would come late. The receptionist thought that he was giving the number of the person who had met with an accident, and she had called up and said that the fellow had met with an accident. So that was the whole confusion. We all were relieved that at least Uncle Umesh's father was safe and sound. We quickly called up Umesh's mom and informed her that everything was fine. The receptionist had already called up the victim's family and even they turned up in half an hour. They thanked Uncle and we wished them speedy recovery. We met the doctor and we came back home. When we reached home, even Auntie was very happy and Uncle was really perplexed and he was quite confused that a wrong call had caused all the confusion among all of us. Fine. So this is the story that we have tried to wind up around the beginning lines which were given. तो इसका आप क्या टाइटल दे सकते हैं? इसका आप एक टाइटल दे सकते हैं अ कॉल, क्लियर, या अ रॉन्ग कॉल, क्लियर, या आप एक दे सकते हैं टाइटल अ मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लियर. आप इसका कोई मॉरल नहीं देंगे. एज आई टोल्ड यू बिफोर, मॉरल इज टू बी लेफ्ट फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट कुड द मॉरल बी, क्लियर. तो हमने देखिए आपने इसमें बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स रखे हैं. मैंने इसमें बोला कि एक तो कैरेक्टर मैं ही हो गई, एक उमेश हो गए, उमेश के फादर और उमेश की मदर. फादर एंड मदर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, क्लियर. एंड व्हेन यू आर नरेटिंग राइटिंग अ स्टोरी, क्लियर, मोस्टली इट इज़ रिटन इन पास्ट टेंस. But at some places where you are writing dialogues, there it will be present tense, future tense, whatever. Like you can say, Umesh's father said to me, please call up home and inform your aunt that I am safe and sound. Clear? So this is the dialogue. Clear? This will come in the exact manner in which the dialogue is spoken. And it will come in the inverted commas. So that's all for today. Hope you like this video. Hope the video is very useful for you. And story writing is a very important part for class 9 and class 10 students. And if you do your story good, you will definitely score good marks. One thing more I would like to add, that I have made many similar videos before where I have given the title like describing an incident, where I've described, like, suppose there was an earthquake in my area and I was conveying that incident, or I was telling that incident to my father the next day, or I met with an accident, my friend called me up and I described the whole accident, or I went to a party and there was a big, like a
chaos at the party, like how the party went blank and everything in the party got wrong. So what all had happened, so I had described all that to my other friend. So these are also few examples of story writing. If you listen to all those videos, I'm sure you're going to get very good ideas which can help you further in your story writing. So all the very best to all the students out there. All the best for your exams, and do keep watching my videos, keep following my videos, and don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye. 1, 2, 3, 4.